Good morning, students. Our today's topic is where are the ATP and NADPH used? Earlier in photosystem 2, ATP and NADPH are formed. So, where they are used? The products of light reaction are ATP and NADPH and oxygen. Of these, oxygen diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of food, more accurately, sugars. During light reaction, ATP, NADPH, and oxygen are formed, and they are used in the dark reaction or the biosynthetic phase where sugar is formed. This process does not directly depend on the presence of light but is dependent on the products of light reaction. That is, the biosynthetic phase does not depend on the presence of light but it depends upon the products which are formed during the light reaction, that is ATP and NADPH. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. And if then light is made available, the synthesis starts again. Let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that carbon dioxide is combined with water to produce glucose or sugar. As we know, in the process of photosynthesis, carbon dioxide combines with water in the presence of chlorophyll. It produces sugar. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceeds, or rather, what was the first product formed when carbon dioxide is taken into the reaction or fixed. So scientists want to know which one is the first final product formed when carbon dioxide combined with any other product. Just after World War II, amongst the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary. The use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis studies led to the discovery that the first carbon dioxide fixation product was 3-carbon organic acid. So Melvin Kelvin then gave the statement कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक 3-कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम उसने बाद में जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway. Hence, it was called Kelvin cycle after him. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid, or in short, PGA. So, can you tell how many carbon atoms does it have? PGA has 3 carbon atoms. 3-phosphoglyceric acid, this phosphoglyceric acid has 3 carbon atoms. Scientists also try to know whether all plants have PGA as the first product of carbon dioxide fixation or whether any other product was formed in other plants. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants, where the first stable product of fixation was an organic acid, but one had 4 carbon atoms in it. The acid was identified to be oxaloacetic acid, in short OAA. Since then, carbon dioxide assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. Those plants in which the first product of carbon dioxide fixation is a C3 acid, that is PGA. That plants are known as C3 plants, or this pathway is known as C3 pathway. And those in which the first product was C4, other associated C4, that is the oxaloacetic acid. Such type is known as C4 pathway.
These two groups of plants show other associated characteristics that we will discuss later. So अभी तक हमने पढ़ा जो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने के बाद में पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उनको कहेंगे C3 प्लांट और C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। और कुछ प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन प्लांट्स को बोलेंगे C4 प्लांट्स और पाथवे को बोलेंगे C4 पाथवे। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Let us now ask ourselves a question that was asked by scientists who were struggling to understand the dark reaction. How many carbon atoms would a molecule have which after accepting carbon dioxide would have 3 carbon of PGA? क्वेश्चन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बन रहा है, तो इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग जिसने वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट की होगी वो मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे। ऑब्वियसली हम सोचेंगे कि 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन बाहर से एक और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन लिया तो इससे 3 कार्बन बन गए, दैट इज PGA। बट बाद में पता चला कि ये 3 PGA नहीं था, जो फर्स्ट प्रोडक्ट था, जो फर्स्ट केमिकल था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था, वो एक 5 कार्बन कंपाउंड था। That 5 carbon compound then combines with oxygen and form 2 molecules of 3 carbon atoms, 3 carbon compound, that is PGA। वो 5 कार्बन कंपाउंड था रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन, वो एक कार्बन के साथ कंबाइन किया 6 कार्बन हो गए, पर उसकी जगह पे बनते थे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 PGA। The studies were unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon ketose sugar ribulose bisphosphate RUBP. Did any of you think of this possibility? Do not worry. The scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believe that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon compound. They spent many years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon RUBP. Now the Kelvin cycle. This is also known as biosynthetic pathway in which sugar is formed. This occurs in the stroma of the chloroplast. Kelvin cycle occur in the stroma of the chloroplast. Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. The RUBP was regenerated. फर्स्ट जो कंपाउंड था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी वो RUBP था, और साइकिल में ग्लूकोज फॉर्मेशन के बाद में वो RUBP फिर रीजनरेट हो जाता था। Let us now see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants. Very important point. ये point कह रहा है कि जिस प्लांट में भी अगर शुगर फॉर्म हो रही है तो उसमें वो केल्विन साइकिल चल रहा है, चाहे वो C3 प्लांट है चाहे वो C4 प्लांट है। हर प्लांट में वेदर C3 और C4 उसमें केल्विन साइकिल चलेगा, क्योंकि केल्विन साइकिल में ही ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है। Very important point. It does not matter whether they have C3 or C4 pathways. For ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under 3 stages: carboxylation, reduction and regeneration. Carboxylation में क्या होगा? RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन करेगा, इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा जिसका नाम दिया रुबिस्को, या फिर पहले रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी कह सकते हैं। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो ये RUBP ऑक्सीजनेज की तरह भी इफेक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है। कैसे? इसका नाम कंप्लीट नाम है रुबिस्को, RUBISCO। कभी ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है और कभी ऑक्सीजनेज की तरह।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन इट विल बिहेव लाइक अ कार्बोक्सिलेज. If concentration of oxygen is more, then it will behave like oxygenase. So it can function in both the manners, under carboxylase also as well as oxygenase also. So first point, carboxylation is the fixation of carbon dioxide into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle, where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme, that is RUBP carboxylase, which results in the formation of two molecules of 3-PGA. अभी पढ़े थे कि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फॉर्म करेगा. Since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase. In short, Rubisco. So Rubisco is the most abundant enzyme available on the earth. Rubisco is the most abundant enzyme which is present on the earth. क्या पढ़ा कार्बोक्सिलेशन में? RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा, 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जो कि अनस्टेबल है. इट ब्रेक्स इनटू 2 कार्बन कंपाउंड विद 3 कार्बन ईच. इसीलिए इस साइकिल को भी हम C3 साइकिल कह रहे हैं. नेक्स्ट इज रिडक्शन. These are a series of reactions that lead to the formation of glucose. The steps involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per carbon dioxide molecule fixed. तो देखिए PGA से ग्लूकोज बनने में जब एक कार्बन को फिक्स करने में दो ATP और 2 NADPH लग रहे हैं. अगेन एक PGA से एक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH लग रहे हैं. पर ग्लूकोज में 6 कार्बन है. इसका मतलब 12 ATP और 12 NADPH यूज़ हो रहे हैं इस होल प्रोसेस में. यहाँ पे हमें एक ATP नज़र आ रहा है कैल्विन साइकिल में. क्यों? दूसरा 2 PGA बने हैं तो दूसरा उस PGA में यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलेशन के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बन रहे हैं. हर एक मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP 6 NADPH और दूसरे PGA मॉलिक्यूल के लिए भी 6 ATP और 6 NADPH. तो टोटल 12 ATP और 12 NADPH यूज़ हो रहे हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए. Regeneration of carbon dioxide acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is to continue uninterruptedly. This regeneration step requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. Hence, for every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH required. So in all, for the formation of one glucose molecule, 18 ATP and 12 NADPH required. So we can say here in and out. During the Calvin cycle, 6 carbon dioxide molecules are used, 18 ATP are used, 12 NADPH are used, and in turn one glucose molecule is formed. That ATP changes into ADP. So again 18 ADP are formed and 12 NADP changes into NADP. So this is the out of the Calvin cycle. I hope this is clear. Thank you.